Hi everyone, welcome back to your channel Clarity for Sure and Negley Clarity. Today we are going to discuss the important MCQs of plant pathology, which are very important for coming IBPS examination mains, A for mains, right? इससे पहले मैंने आपके साथ प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हमने काफ़ी डिटेल में सारे फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए और सारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वी हैव कवर्ड देम variety of questions I have discussed in the previous video. You can check those videos and the link for the same video will be given in the description below. Okay. So before going into the today's session, I would like to request every student watching today's session to go through the PYQ analysis playlist present on our Agri Clarity channel. Okay. Where we have analyzed we have provided thorough analysis of the IPS AFU mains questions from the year 2021 to 24। एंड अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो 2017 से 2024 तक का पूरा डिटेल एनालिसिस है। ओके। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप यू कैन गेट एन नियर अबाउट आइडिया कि हाउ विच क्वेश्चन विल बी रिपीटेड इन द कमिंग नेक्स्ट ईयर। ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का डिस्कशन किया हुआ है। इसके बाद आपको ईयर वाइज एनालिसिस, देन टॉपिक वाइज एनालिसिस, देन व्हाट टॉपिक्स टू स्किप, व्हाट टॉपिक्स टू स्किम, किस टॉपिक्स को पढ़ना है, किस टॉपिक को बस स्किम करना है, जस्ट ग्लैंस ओवर करना है। तो ये सारी चीजें, इतने सारे टॉपिक्स को एनालिसिस को हमने उसको प्रायोरिटी देते हुए ये सारे एनालिसिस बनाए हुए हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट पहले एक बार ये एनालिसिस को चेक करें। देन आप यहाँ के क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमने किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक किया है। देन वी हैव डिस्कस्ड, राइट? सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ये क्वेश्चन है प्लांट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। ओके। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉइल स्टेरिलाइजेशन इज नॉट करेक्ट? आस्किंग द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर इज नॉट करेक्ट। Okay, at 50 degrees Celsius, most weeds and insects are killed. At 60 to 72 degrees Celsius, most plant pathogenic fungi and bacteria are killed. At 82 degrees Celsius, heat tolerant wheat seeds and TMV are destroyed. And at 95 to 100 degrees Celsius, TMV and some resistant wheat seeds are killed. Okay, so इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है सॉइल स्टेरिलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, विच इज 1, 3 एंड 4। ठीक है। देन इसका मतलब हुआ ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। ठीक है। सो देखते हैं वाई अदर ऑप्शंस वर नॉट द करेक्ट। ओके। So the first statement was incorrect because at 50 degrees Celsius nematodes and oomycetes die. Okay, तो ये यहाँ से आपको ये points जो मिल रहे हैं, please note it down in your revision notebooks or anywhere where you put all the analysis or all the MCQs on present on the YouTube, and उसको आप एक नोट्स की तरह भी फॉर्मुलेट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस नेमेटोड और ओमाइसीटीज के लिए होता है। देन सेकंड स्टेटमेंट जो करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट 82 डिग्री सेल्सियस मोस्ट वीड्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स आर किल्ड नॉट फंजाई। ओके। सो यहाँ पे हमने टीएमवी की बात की गई थी, ये वायरल है जो कि, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है, राइट? देन फोर्थ स्टेटमेंट टीएमवी एंड हीट टॉलरेंट वीट सीड्स आर किल्ड एट अराउंड 95 to 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट लोअर देन इट। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, राइट? Moving on to the next question. Identify the correct matching pair of between the biocontrol agents and their target pathogen and disease. Biocontrol agent one of the most blooming topic we can say, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। ओके। अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस को अटेंड किया होगा, सो यू मस्ट फील दैट हाउ बायोकंट्रोल एजेंट्स आर one of the prime or we can say one of the prime topics of plant pathology. Okay. So the first question is Amphilomyces quisqualis is the biocontrol agent for powdery mildew fungi. Okay. For Darcula phylum for the rust fungi, then Agrobacterium radiobacter K884, which is against the crown gall, and Bacillomyces elaciacensis. Okay, elaciacensis. Sorry, elaciacensis. So this is for
juvenile parasite of nematode. So for the correct answer for this question will be option D, which is 1, 3 and 4. मतलब कि सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ करेक्ट है. ओके, सो यहाँ से आपको चार डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के. तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो. पाउडरी मिल्ड्यू के लिए एम्फेलोमाइसिस होता है, रस्ट के लिए ड्रैकुला होता है, डार्कुला होता है, सॉरी. देन क्राउन गाल के लिए एग्रोबैक्टीरियम होता है. देन जुवेनाइल पैरासाइट्स ऑफ नेमाटोड के लिए पेसिलोमाइसिस होता है. ओके, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे अगर यहाँ पे मैंने कुछ इन डिटेल भी दिया हुआ है. जैसे फोर्थ ऑप्शन के लिए, इट पैरासाइजेस द एग्स ऑफ मिलिडोगाइनी इनकॉग्निटा विच इज अ नेमेटोड, दो पेस्चुरिया पेरासिस टारगेट्स जुवेनाइल्स. ओके, सो इससे भी हो सकता है. दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दिया गया है. ओके, देन next is question says that a farmer applied a fungicide on his grapevine, okay, grapevine crop to manage downy mildew. Here we are talking about the downy mildew. Later, he realized that the chemical used was not systemic, worked only on the surface, and had to be applied before the infection. So यहाँ हम toxicology की बात कर रहे हैं. Again, one of the important topic of the plant pathology. अगर जिस whoever students have watched our session on the PYQ analysis of the pathology, they must know that why I have put this toxicology question here, right? Then you have to choose which of the following fungicides is the most likely to have used here, okay, to control the downy mildew of grapevine. So options are carbendazim, metaxil, Bordeaux mixture, iprodiodine, and propiconazole. Okay, so the answer for this question is option C, which is Bordeaux mixture. Okay, one of the most important question. हमेशा Bordeaux mixture और Bordeaux paste पे उनके फॉर्मुलेशन का रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं. तो बहुत कॉमन हो गया. आई फील बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स दे मस्ट नो अबाउट द फॉर्मुलेशन एंड रेशियो रिगार्डिंग द मिक्सचर एंड पेस्ट. ओके, इफ यू डू नो, please differentiate give me the differentiating ratio of the body X mixture and body X paste in the comments below, right? So body X mixture is a classic copper fungicide, non-systemic, prophylactic in nature. Okay, prophylactic in nature, used against the downy mildew of grapes and several other disease. Okay, so ये हमारे हो जाते हैं थर्ड क्वेश्चन. मूविंग ऑन द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Which of the following statement is not correct regarding the sulfur fungus? Again, regarding the toxicology question. So, first statement says that vertebral sulfur is a systemic fungicide. Okay. फिर vapum is a organic sulfur compound with nemacidal activity. Lime sulfur is used against the powdery mildew and apple scab. Then sulfur dust is used as both street treatment and soil application. तो ये different different types के sulfur fungicides है. Vegetable powder, vapum, lime sulfur and sulfur dust. तो अगर आपको सारे sulfur fungicides के, if you have any idea of any of the sulfur fungicides, this question will be very easy to you to eliminate. Okay, so the correct answer for this question is option D, which is 1 and 2. Not correct. Okay, 1 and 2 not correct है, 3 and 4 correct है. Okay, let's see why. First statement is incorrect because vegetable sulfur is contact, not a systemic fungicide. So that is why it is a uh, incorrect statement here. Okay. Then second statement, vapum is a monoalkali ditheocarbonate with fungicidal, nematicidal, and insecticidal activity. So that means it is a ditheocarbonate. So it is not a sulfur fungicide, right? Then third statement is again correct. Lime sulfur is helps in controlling the powdery mildew and apple scab. Then fourth, sulfur dust is used again the seed treatment, crop dusting, and soil application as well. Okay. सो यहाँ से आपको अगेन चार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए हैं आपके सफर फंडिसाइड से. आप यहाँ से नोट्स अपने बना सकते हो. देन यू कैन मैच विथ योर ओरिजिनल नोट्स फ्रॉम वेयर यू आर trying to revise all the content of regarding the plant pathology. You can add these special points there. Okay. Moving on to the next question, which of the following statement is not correct about the Anton Dewberry? Again, आपसे साइंटिस्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं. प्लांट साइंस के क्वेश्चंस की बात अगर की जाए हमारे ए फॉर मेंस में, सो यू हैव टू मेजर मेजर जो भी साइंटिस्ट है, जो भी एसोसिएटेड है, ऑल द मेजर साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द plant pathology stream, you should know their what work they have done, what are their history, how they are known, because okay, so what was the thing that made them famous. so ये सारी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए. so यहाँ पे हमने एंटोन टी बैरी के बारे में बात की गई है. तो उनके कुछ कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ कुछ उनके वर्क्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे
एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ही वर्कड ऑन heterogeneous नेचर ऑफ rust fungi. Okay, he is called the father of tropical plant pathology. Then he is distinguished between obligate and facultative parasites, and he discovered body extinction. Most of the students try करेंगे ये क्वेश्चन को स्किप करना, बट यू कैन सी दैट यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ये चार स्टेटमेंट से मैं आपको चार क्वेश्चंस बना के दे सकती हूँ। दे कैन आस्क इन द क्वेश्चन, इन द वन लाइनर फॉर्मेट, हु इज नोन बाय द फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। ओके, देन दे कैन आस्क इन द वन लाइनर फॉर्मेट, what is the distinguishing character between the obligate and facultative parasites, right? Then who again in the one liner format, who discovered the body X mixture? Then again in the liner format, who worked on the heterogeneous nature of rust? So इससे आप ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो रहे हैं। तो डोंट ट्राई टू मिस एटलीस्ट इस सेशंस में। आपको ये सेशंस रिवीजन के पर्पज से ही दिए जा रहे हैं, राइट? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 2 and 4 only. Okay, so 2 and 4 is the not correct option. Other options like 1 and 4 was the correct regarding the Anton D. Barry findings, right? So first option is डी बैरी स्टडीड द रस्ट फंजल लाइफ साइकिल। ओके, सो इट इज करेक्ट, तो नॉट करेक्ट की बात की गई थी। देन सेकेंड, एच एम वॉर्ड वॉज द इज द नोन बाय द फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। सो यहाँ से आपको एक नया पॉइंट पता चल गया। देन थर्ड, ही बेंटोन डी बैरी डिस्टिंग्विश द ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। देन बॉडी एक्स मिक्सचर, जिनको सबको आई मीन हर किसी को पता है, इट वॉज द thing which was discovered by Miladate, then that is why the option second and fourth were not correct in this question, right? Moving on to the next question, sixth question. Again, we have to choose the correctly match regarding the contributions in the nematology. Nematology से भी questions आते हैं, okay? There are questions regarding the nematology. So nematology is quite I mean, it is very small topic, okay? But the questions are generally from the main nematodes and their diseases caused by them, and if they are anywhere they have contribution regarding the biocontrol management. Okay, they have used any use regarding the biocontrol management, and lastly the scientists regarding them. So only these four broad topics are important from regarding dermatology. तो इसी में से एक important topic साइंटिस्ट पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लाया है। ओके, सो फर्स्ट इज नीदम वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द वीट कार्ल नेमेटोड एंग्विना ट्रिटिसी। ओके, एटकिंसन वाज द वन टू फाइंड द रूट नॉट nematode association with Fusarium wilt of, or we can say Fusarial wilt of cotton. Okay, Hunger was the one who had a role of nematodes in who discovered the role of nematodes in bacterial wilt of tomato, and Hewitt et al. Discovered nematodes as vectors of plant diseases. ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 1 2 3 4, मतलब all the options here are correct. Okay, so all the options and all the scientists and their contributions given here in the statements are true. Okay, let me erase this. Okay. ओके, सो सो इट इज इट। सो यहाँ से आपको चार डिफरेंट साइंटिस्ट के पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंड ऑल द साइंटिस्ट आई हैव गिवन हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नेमेटोलॉजी पर्सपेक्टिव। ओके, सो प्लीज note these point in your notebooks. Okay, moving on to the seventh question, a plant virologist observes that virus acquired by vector requires a latent period inside the insect before transmission. The virus persists through molting and is also passed on through insects' progeny. Which type of transmission is most likely to be here? So here we are discussing the viral transmission. Okay, fungi viral and you can, I mean, the non-persistent, semi-persistent, persistent, circulative, propagative. These are all the transmissions important from the pathology perspective. They are linked with entomology as well. But यहाँ पे ये transmission बहुत important हो जाता है. It is a very small topic, but बहुत की terms and sentences जिससे आप ये सारे terms को differentiate कर सकते हो. So option says that non-persistent but non-circulative, semi-persistent and non-circulative, persistent and circulative propagative, non-persistent and circulative, and semi-persistent and circulative. So the correct answer is option C, which is persistent and circulative propagative. Okay, why? Because persistent virus may circulate and propagate inside the vector, and they require a latent period to persist through molding and may transmit transferial, which transovirial. Okay,
ट्रांसओवरियल मीन्स दे कैन पास्ड ऑन टू देयर प्रोजेनी एज वेल. सो इसका एग्जाम्पल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस डॉर्फ वायरस विच इज कॉज बाय नेफोटिटिक्स सिंटेसिप्स. ओके, सिंटेसिप्स. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से. सो यू कैन सी किच कौन कौन से एरियाज है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से. आई हैव पिक्ड ओनली दोज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू एनालिसिस. एंड कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया है कि आपको हैवी क्वेश्चंस ट्राई कराओ या कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चंस ट्राई कराओ. ये सारे बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस पे डिसेंट डिफिकल्टी लेवल के साथ फॉर्मुलेट किए गए. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन अच्छा लग रहा हो. अगर इफ यू फील सो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ डू यू फील अबाउट दी क्वेश्चन फॉर्मुलेशन और क्वेश्चन आर्टिकुलेशन गिवन हियर. ओके. Next is the an entomologist notices that only nymphs of a certain insect group can acquire the virus. Again, regarding the transmission topic, but once acquired, the adults remain viruliferous throughout their life. And this unique transmission pattern is typical of where you can see this kind of transmission. Here, the key term you can see that they are talking about the nymph. So, if you are familiar with the the insects in which their one of its stages is named, then you can be able to answer this question very easily. So answer here is B. Okay, so trips. So in the trips, they are because only are the insects where only nymphs can survive or they can acquire viruses, but they stay virophilous as an adult. So that is why this is the answer, trips. Okay, so trips tabaci with tosper viruses are one of the important or we can say insect pest in the transmission pattern. Okay. Moving on to the next, which of the following combination is correct regarding the vector group and the nature of viruses? Okay, so again, ये बहुत important topic है. That is why I'm trying to have a glance over it for all of you. Okay, so aphids are known by they are of non-persistent nature. Leafhoppers are persistent circulative nature. Whiteflies are circulative non-propagative nature, and trips are semi-persistent nature. So you have to choose the correct combinations here. So answer is A. 1, 2, and 3. Only fourth option, which is regarding the trips, is not correct. Okay, because trips, as we have discussed in the earlier slide, trips is known by the persistent circulative manner, not semi persistent. That is why वो wrong हो जाता है. Okay, and बाकी सारे options तो एकदम correct है, right? Moving on to the 10th question of today's session, we have to choose the correct pair here. Okay, so यहाँ पे हमने disease and their causal organism के regarding question डाला है. So against one of the most important question, one liner के format में आपको different different disease के causal organisms पूछे जा चुके हैं काफी बार AFO mains में. So that is why you have to choose the correct match pairs here. Okay, so ring spot is known by Leptosphaeria. Grassy shoot is known by their phytoplasma, then brown rust, Puccina styriformis, then yellow rust, Puccina recondita. So you have to choose the correct pair and option D, 1 and 2 is only the correct pair. Other options are wrong. Okay. So यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया है ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट को एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स कर दिया है. ओके, सो दैट इज यू कैन सी दैट Puccina recondita is known by the brown rust and Puccina styriformis is known for the yellow rust, right? Moving on to next, here we are going in the detail analysis, or we can say detail question practice of the all the diseases regarding the field crops and the horticultural crops. Again, one of the important topic regarding the plant pathology topic. Okay, so you have to choose the correct conditions which favors the development of wilt. Okay, so low temperature and high humidity and acidic soils, high temperature, low humidity and alkaline soils, moderate temperature, high soil moisture, acidic soils, low temperature, high soil moisture, and neutral soils. The correct answer here is option B. Okay, high temperature, low humidity, and alkaline soil are the conditions which favors the development of wilt. Okay, why? Because as you can see, high temperature near about 30 to 35 degrees Celsius and low moist soil, also low soil moisture and alkali soil give excess nitrogen aggravate which helps in aggravate excess nitrogen which helps in aggravating the wilt of this sugarcane. And again मैंने C option को यहाँ पे डाला हुआ है which is moderate temperature, high soil moisture and acidic soil. These conditions favor the red rot, okay, not wilt. So यहाँ से मैंने आपको red rot के लिए भी conditions को बता दिया है मैंने आपके लिए. देन आपके लिए विल्ट के लिए बता दिया. तो प्लीज मेक नोट ऑफ दीज पॉइंट्स, राइट?
Moving on to the next question. Here we are talking about the cigar end rot of banana. Okay, so you have to choose the not correct statement here. Okay, so this disease is caused by Verticillium theobrombi. The rot extends up to one third of the fruit but develops dry rot internally. Then it effectively controlled by covering the flowers with polythene bags, and conidia are 3 to 5 septate and they are spread by wind. Okay, सो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई भी हम अगर आप कोई भी डिजीज पढ़ रहे हो तो आपको डिजीज का कॉज मैकेनिज्म, कोई स्पेशल उसके सिम्टम के जैसे सारे ऑलमोस्ट एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स अगर जिन जिन क्रॉप्स में होता है तो वो बहुत सिमिलर होता है। यू कांट आई मीन कुछ डिफरेंट होता है, जैसे ग्रेप्स में बर्ड आई के नाम से जाना जाता है। सो वो कोई पिकुलर सिम्टम्स या पिकुलर टर्म अगर डिनोट किया गया देन ओनली यू हैव टू रिमेम्बर, अदरवाइज आप एक बार कोई डिजीज को बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके कोनिडिया के बारे में, उसके ट्रांसमिशन आई मीन द स्प्रेड के बारे में, ओके डिजीज साइकिल के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, देन आपको वापस से उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे गेट्स ऑन रिपीटिंग। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, सिगार एंड रॉड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है विच आर नॉट करेक्ट इज ऑप्शन सी। ओके, ओनली फोर्थ ऑप्शन। ओके, rest options are correct regarding the cigar and rot of banana. Okay, so why? Because 3 to 5 septate conidia are spread by the wind refers to crown rot pathogens, not cigar and rot pathogens. Okay, I mean the statement here says that crown rot pathogens are 3 to 5 septate and they are spread via wind. And if we talk about the cigar and rot, their conidia are hyaline. Okay, I mean they are colorless and they are cylindrical and they have a mucilaginous, or we can say very slimy heads. Okay, so that is why the fourth option was not correct regarding cigar and rod. So यहाँ पे मैंने आपको important particular points cigar and rod का यहाँ से revise करा दिया, right? Next question, we are talking about the bacterial blight of the cotton, which is known by black arm, is characterized. They are, I mean, if you are familiar with the black arm, they have different phases. Okay, पहले मतलब स्क्वायर पे होता है, देन लीफ पे होता है, देन सीडलिंग पे होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसपे थ्रू विच दिस black arm disease progresses. Okay, so we have to choose which of the following phases involves the premature bursting of balls and lint stains. Okay, so option says that seedling blight, angular leaf spot, vein blight, black arm, and square rot and ball rot. So the answer here is option E. It is very easy to pick square rot and ball rot because, as the name suggests, there is something related to bursting of balls and lint staining. Okay, so how they are seen, they shows a water soaked lesions on the walls, premature bursting can be seen, and lint staining, and this all leads to loss of their market value, right? Then next question is, a farmer observes a cotton plants with vascular discoloration. Okay. Then there is also marginal chlorosis and necrosis and partial wilting confined to only one side of the plant. Okay. Which of the following disease is most likely here? Again, this kind of questions are very common in A for means examination. Okay. So जैसे कि आपको पता है ये हम यहाँ पे विल्ट की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस तो I mean, let's see what happens. Okay, I don't want to give here hints for you. Okay, so verticillium wilt, fusarium wilt, bacterial blight, ball rot, and tobacco streak virus infection. So the correct answer is B. Okay, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हम विल्ट की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, एज यू कैन सी पार्शियल विल्टिंग हो क्या टर्म मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। सो व्हाट हैपेंस नो, we are very familiar that this question is talking about the weight, but if you don't know the important differentiating characteristics regarding the verticillium and the fusarium, then you will be confused with the options. Okay, so that is why you have to read the particular, I mean we can say peculiar symptoms regarding the wilt if any crop has more than one different types of wilt. Okay, so the B option is correct because fusarium wilt shows marginal chlorosis, vascular browning, wilting, and sometimes partial on the one side, and shunted plants with poor ball formation. Okay. अगर आप if you feel that the way I am explaining is having any impact on you, you can, or you feel that any plant pathology topic or entomology topic or plant physiology topic or genetics topic you want me to explain to you all, please let me know in the comments. I will surely reply to a comment and I will make sure that I will provide to provide that.
the video on that particular topic as soon as possible. Okay, that's my promise. So please, if you feel so, please let me know the topics or any doubts you feel so far in this session in the comments below. Okay. So next question is, which of the following combination is correct regarding the cotton build pathogens and special survival structures? Okay. So why I have given two questions regarding the build pathogen, because again I have I mean बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सेशंस लेते हैं, तो हमें पता चला कि दे आर वेरी कंफ्यूज विद दी विल्ट पैथोजेंस. ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू to show you all how what are the differences or how you can differentiate among between these wilt pathogens, right? So first is Fusarium wilt. Their survival structure is microsclerotia. Then Verticillium wilt. Their survival structure is Chlamydospores. Then Fusarium wilt. Again Chlamydospores. Verticillium wilt. None survive in the soil, and both Fusarium and Verticillium do not produce any resting spores. So the correct answer is option C. Okay, so option C is Fusarium wilt is and it's the resting structure for it is Chlamydospores. Okay, so let's see why the other options were not correct fit. So A option is incorrect because again it is saying that it is the microsclerotia is its survival structure, whereas Chlamydospores is its survival structure, right? Then B, Verticillium survives mainly through microsclerotia. So हमने यहाँ पे reverse again कर दिया था. Then C option तो correct है ही. Then D option Verticillium जो soil में होता है वो they can survive as far as 14 years as microsclerotia. And again fourth option is incorrect as it is saying that they don't have any kind of resting spores, whereas we have seen that in the Fusarium wilt, they are survived through Chlamydospores, and in the Verticillium field, they are survived through microsclerotia. Okay, so again, fourth, last option is, it is obvious that it is wrong. Okay, so यहाँ तक हमने सेशंस के, मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर्स भी बता दिए, देन सेशंस के इम्पोर्टेंस भी बता दिए, कौन से एरिया इम्पोर्टेंस है. फ्रॉम हियर ऑन मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस डाले हुए हैं. ओके, सो प्लीज ट्राई टू पॉज दिस pause the video and try to answer these all questions. Denote the question number like 16 का कौन सा ऑप्शन होगा, like 16A or E or C, whatever you feel in the comments below. Okay, so try to pause the questions and try to answer these all questions in the comments below. I will be answering all the comments. Okay, जिन्होंने भी whoever have right they have given correct answer, then they have given wrong answer, मैं सारे comments का reply I will make sure that I'll reply all the comments, right? So ये हमारे यहाँ के 5 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने आपके लिए आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है. ओके, अगर यू फील दैट द क्वेश्चंस वे वेरी एट पार level of the A4 mains examination, you can also check our Agri Clarity Telegram channel where I have given these kind of quizzes. Okay, or regarding different topics from the plant pathology like diseases, toxicology, causal organism. As you can see, काफी students attempt भी कर रहे हैं. Okay, so you can attempt these quizzes there as well. We are also we are also providing free quizzes daily at 9 p.m. on our Telegram channel from the various subjects which are important for IOBS AFO. So you can check these questions available on our Telegram channel. Okay, so that was it. Thank you, and I hope you are doing good with your AFO mains preparation. If you feel any kind of doubt, don't hesitate. Please try to please feel free to put your doubts in the comments below. Okay. And if you feel so that these questions are of good level and I have tried to explain these questions very well to you, please let me know in the comments as about those as well. Okay, and you can also check our A4 mains test series available on the C4 courses website. The link in of the website is given in the description below. Okay, we are going with we have going with the FLT test right now. We have provided all the daily subject wise and topic wise tests on the on our website, and in the next coming weeks we are also planning to give live NABARD session, live AFO sessions, and like it will be like of a crash course. Okay, हम सारे topics को cover करने वाले हैं. So if you are interested in attending those sessions, please you can check our
I mean the courses, the test series, give link given in the description below. Okay, we have also provided the master notes for you all of the subjects. So आपको एक ही प्लेस में एट मिनिमल कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, फुल एंड टेस्ट भी मिल रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल रहा है, लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं एंड मास्टर नोट्स भी मिल रहे हैं. So what we are waiting for? Please go and check our website, and if you feel any kind of doubt, please let me know in the comments below. Okay, thank you.